The icy, desolate waters of the Arctic and the vast expanse of the Pacific Ocean have recently become the stage for a significant display of Russian military might. In a series of carefully choreographed exercises, Russia has sent a clear and powerful signal to the world, particularly to the United States and its NATO allies. The successful test firing of advanced missiles from its nuclear-powered submarines is not merely a routine drill, it is a declaration of intent. This demonstration showcases Russia's resurgent naval capabilities and its determination to assert its dominance in strategically vital regions. As global powers watch closely, these actions raise profound questions about the future of international security and the potential for new conflicts in previously quiet corners of the globe. At the heart of this display was the Pacific Fleet's Oscar II class nuclear submarine, the Omsk. This formidable vessel launched a P-700 Granite supersonic anti-ship cruise missile, a weapon designed to challenge the most advanced naval defenses. The missile traveled at an astonishing speed of Mach 2.5, striking a target over 250 kilometers away with pinpoint accuracy. This successful test was swiftly followed by another, involving the more modern Yasen M-class submarine, the Krasnoyarsk, which fired two P-800 Onyx supersonic missiles. These exercises conducted in the northern Pacific serve as a stark reminder of Russia's undiminished military focus, even as the conflict in Ukraine continues to demand significant resources. The timing and location of these tests are deeply significant. By conducting them in the Arctic and Pacific, Russia is highlighting its strategic priorities and its capacity to operate in some of the world's most challenging environments. The message is unambiguous. Russia sees the High North not as a frozen wasteland, but as a critical frontier for its national security and economic future. For America and the NATO alliance, this represents a direct challenge to their influence in a region that is rapidly gaining importance. The echoes of the Cold War are palpable, as submarine patrols and missile tests once again become the language of international diplomacy and military posturing. This renewed focus on naval power is the culmination of a long and painful journey for the Russian Navy. The memory of past failures, most notably the tragic Kursk submarine disaster, has fueled a relentless drive for modernization and reform. The recent missile tests are a testament to the lessons learned and the progress made over the last 2 decades. Russia has not only upgraded its hardware, but has also overhauled its operational doctrines and safety protocols. As we delve deeper into this new chapter of military competition, it is essential to understand the historical context, the technological advancements, and the geopolitical shifts that are shaping this emerging confrontation. To truly comprehend the significance of Russia's present naval strength, one must look back to a dark day in its maritime history, 12th August 2000. On that day, the K-141 Kursk, an Oscar II class nuclear submarine, the same class as the Omsk that recently conducted tests, suffered a catastrophic explosion and sank in the Barents Sea. The disaster claimed the lives of all 118 crew members aboard and exposed the dire state of the post-Soviet Russian Navy. The incident was a national humiliation, revealing critical flaws in equipment maintenance, safety procedures, and rescue capabilities. The world watched as a once mighty superpower struggled and ultimately failed to save its sailors. The Kursk tragedy became a pivotal moment, a painful catalyst for profound change within the Russian military establishment. President Vladimir Putin, then in his first term, faced immense public and international criticism for the government's handling of the crisis. This searing experience instilled a firm resolve within the Kremlin to never again allow its naval forces to fall into such a state of decay. The disaster served as a brutal lesson. A powerful nation cannot project its influence or defend its interests without a modern, capable, and reliable navy. The ghost of the Kursk has haunted Russian naval strategy ever since, driving a multi-decade effort to rebuild and re-equip its fleets. In the years that followed, Russia embarked on an ambitious and costly modernization program. Significant investment was poured into developing new classes of submarines, such as the formidable Yasen M and Bore classes, while older vessels, including the remaining Oscar IIs, underwent extensive upgrades. The focus was not just on firepower, but on improving everything from sonar and stealth technology to crew safety and emergency response systems. The very culture of the Navy was scrutinized and reformed, with a renewed emphasis on discipline, professionalism, and operational readiness. The goal was to transform the Navy from a relic of the Soviet era into a flexible, high-tech force fit for the 21st century.
The recent successful missile launches are direct evidence that these lessons have been learned and applied. The ability of the Omsk and Krasnoyarsk submarines to execute complex missile strikes flawlessly demonstrates a level of proficiency and technological sophistication that was unimaginable in the immediate aftermath of the Kursk disaster. Russia has shown that it has not only overcome the technical failures of the past, but has also developed a new generation of weaponry that can challenge its adversaries. The journey from the depths of the Barents Sea to the successful missile tests in the Pacific is a story of national resilience and strategic renewal, forged in the crucible of tragedy. For centuries, the Arctic was a remote and inhospitable frontier, a frozen expanse largely ignored by global powers. However, climate change is rapidly altering this reality. As global temperatures rise, the Arctic ice cap is melting at an unprecedented rate, opening up new possibilities and new arenas for competition. The most significant of these is the Northern Sea Route, a shipping lane that hugs the Russian coastline. This route offers a tantalizing shortcut between Asia and Europe, potentially reducing transit times by up to 40% compared to traditional routes through the Suez or Panama canals. Imagine a container ship from Shanghai reaching Rotterdam 2 weeks faster. The economic implications are immense. Russia, by virtue of its geography, holds a commanding position over the Northern Sea Route. It views the route not just as a commercial opportunity, but as a vital strategic artery, essential for its economic development and national security. In response, Moscow has been investing heavily in building up the necessary infrastructure to control and exploit this emerging waterway. This includes constructing new deep-water ports, search and rescue stations, and military bases along its vast Arctic coastline. Furthermore, Russia operates the world's largest and most powerful fleet of nuclear-powered icebreakers, a crucial asset for ensuring year-round navigation through the challenging Arctic waters. This flurry of activity has not gone unnoticed by the United States and its NATO allies. They view Russia's growing control over the Northern Sea Route with increasing alarm. Washington asserts that the route should be considered an international waterway, open to all nations without restriction. This fundamental disagreement over the legal status of the Northern Sea Route is a major source of tension. For NATO, Russia's military buildup in the high north is seen as an attempt to create an anti-access or area denial zone, potentially restricting the freedom of navigation for naval and commercial vessels from other countries. The strategic stakes are incredibly high, turning the region into a potential flashpoint. The competition in the Arctic extends beyond shipping lanes. The region is believed to hold vast, untapped reserves of oil, natural gas, and critical minerals. As the ice recedes, these resources become more accessible, sparking a modern-day gold rush. Nations are scrambling to stake their claims and secure access to this potential wealth. For Russia, whose economy is heavily reliant on hydrocarbon exports, the Arctic's resources are of paramount importance. This economic imperative, combined with the strategic value of the Northern Sea Route, ensures that Russia will continue to defend its interests in the region with vigor, setting the stage for a prolonged and tense standoff with the West. The missiles at the heart of Russia's recent naval exercises, the P-700 Granite and the P-800 Onyx, represent two generations of formidable anti-ship weaponry. The P-700 Granite, codenamed Shipwreck by NATO, is a Soviet-era heavyweight. It is a large, long-range supersonic missile designed with one primary mission in mind: to destroy American aircraft carrier groups. Although it is an older system, its sheer size, speed, and 750-kilogram warhead still make it a significant threat. The Granite's guidance system was revolutionary for its time, allowing a swarm of missiles to communicate with each other in flight, coordinate their attack, and overwhelm a fleet's defenses. The test by the Omsk proves that this legacy weapon remains a potent part of Russia's arsenal. In contrast, the P-800 Onyx, also known by its export name Yakhont, represents a more modern and versatile generation of Russian missile technology. It is a smaller, faster, and more agile supersonic cruise missile capable of being launched from a wide variety of platforms, including submarines, surface ships, and coastal defense batteries. The Onyx flies at low altitudes to avoid detection and accelerates to high supersonic speeds during its final approach, making it extremely difficult to intercept. Its deployment on the advanced Yasen M-class submarine Krasnoyarsk showcases Russia's strategy of integrating newer, more flexible weapons across its naval forces to enhance their lethality. The strategic importance of these weapons cannot be overstated, especially for a power like Russia seeking to counter the naval superiority of the United States.
Aircraft carriers are the centerpiece of American naval power, allowing Washington to project force anywhere in the world. Missiles like the Granite and Onyx are known as carrier killers because they are specifically designed to negate this advantage. By fielding a credible threat to these high-value assets, Russia can create a protective bubble around its coastlines and deter foreign naval intervention in its near abroad. This asymmetric approach allows Russia to challenge a more powerful adversary without needing to match its navy ship for ship. The integration of these missiles onto nuclear-powered submarines adds another layer of danger. Submarines are inherently stealthy platforms, capable of lurking undetected for weeks or months in the depths of the ocean. A submarine like the Omsk or Krasnoyarsk, armed with these powerful anti-ship missiles, can appear seemingly out of nowhere to launch a devastating surprise attack on an enemy fleet. This capability forces adversaries like the US Navy to expend enormous resources on anti-submarine warfare, and to operate with a much higher degree of caution in areas where Russian submarines might be present, effectively shaping the strategic and operational calculus of naval warfare. The United States has been, well, keeping a close eye on Russia's military resurgence and its activities in the Arctic, watching with a mix of concern and resolve. You see, Washington hasn't been sitting idly by. In response to Russia's growing presence, the US and its NATO allies have really ramped up their own military exercises and patrols in the high north. A notable example of this was the Northern Edge 2025 exercise. It was a massive war game, involving over 6,400 personnel, 100 aircraft, and a naval contingent led by the aircraft carrier USS Abraham Lincoln. These exercises are designed not only to enhance the operational readiness of Allied forces in cold weather conditions but also to, send a clear signal of deterrence to Moscow. Now, this back and forth of military drills has created a tit-for-tat dynamic that's, escalating tensions. Just as the American Northern Edge exercise wrapped up, Russia and China launched their own joint C-2025 naval maneuvers, widely seen as a direct response. Furthermore, following some provocative statements from Russian officials, President Donald Trump ordered the redeployment of American nuclear submarines to appropriate areas on the 1st of August 2025. This move, while not specifying the exact locations, was interpreted as a direct warning to Russia, demonstrating America's willingness to counter Russian posturing with its own powerful strategic assets. This is, quite frankly, the modern equivalent of moving chess pieces on a global board. The strategic competition is also playing out beneath the waves. The US Navy considers anti-submarine warfare a top priority, especially given the threat posed by advanced Russian submarines like the Yasen M class. It is investing heavily in new technologies, including unmanned underwater vehicles, advanced sonar arrays, and maritime patrol aircraft like the P-8 Poseidon, to track and neutralize these underwater threats. The North Atlantic and the Arctic have once again become a tense theater for a cat-and-mouse game between American hunter-killer submarines and their Russian counterparts, reminiscent of the most perilous days of the Cold War. Beyond direct military confrontation, the US is also employing diplomatic and economic pressure. The Trump administration has been, quite vocal in its criticism of Russia's actions in Ukraine and has used the threat of economic sanctions as leverage. For instance, President Trump gave Moscow an ultimatum to agree to a peace deal in Ukraine by early August, threatening secondary tariffs on Russian oil exports if the deadline was not met. This multi-pronged approach, combining military readiness, strategic deployments, and economic coercion, forms the core of America's strategy to manage and counter the challenge posed by a newly assertive Russia in the Arctic and beyond. एक महत्वपूर्ण और कुछ हद तक अप्रत्याशित भू-राजनीतिक घटनाक्रम में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफी गर्माहट देखी जा रही है। ये बदलाव उन वर्षों से अलग है जब दोनों देशों के बीच अविश्वास और रणनीतिक उद्देश्यों में भिन्नता, खासकर अफगानिस्तान को लेकर, छाई रहती थी। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय मुलाकातें और रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला ने इस रिश्ते में नई जान फूंकी है, जिससे यह साफ झलकता है कि वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों ही अपने सहयोग को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बदलाव को पूरे क्षेत्र में, खासकर नई दिल्ली में, बहुत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि इसका दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर दूरगामी असर पड़ सकता है। इस नए सहयोग का एक स्पष्ट संकेत तब मिला जब अमेरिकी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज USS वैन ई मेयर कराची के बंदरगाह पर पहुंचा। नौसैनिक जहाजों की ऐसी यात्राएं हमेशा एक मजबूत कूटनीतिक संदेश होती हैं और पाकिस्तान में अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी को इस्लामाबाद के लिए रणनीतिक आश्वासन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिका के लिए यह एक जटिल लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार के साथ फिर से जुड़ने का तरीका है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह इस बात की पुष्टि है कि वह अमेरिकी रणनीतिक सोच में अब भी प्रासंगिक है, खासकर ऐसे वक्त में जब उसे आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह यात्रा दोनों देशों के सैन्य सहयोग को फिर से मजबूत करने की साझा इच्छा को दर्शाती है। इस समुद्री पहल के साथ साथ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी अहम कदम उठाए गए हैं। सितंबर 2025 की शुरुआत में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि यह वॉशिंगटन के उस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें वह चीन पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता को कम करना चाहता है, जो वर्तमान में इन खनिजों के वैश्विक बाजार में हावी है। पाकिस्तान के साथ साझेदारी करके अमेरिका को इन जरूरी संसाधनों का एक नया स्रोत मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़ने का मौका मिलता है। ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों का संदर्भ इस समीकरण में एक और परत जोड़ता है। जहां भारत जैसे देशों से आयात पर भारी शुल्क लगाए गए हैं, वहीं पाकिस्तान पर यह शुल्क अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं। व्यापार नीति में यह भेदभाव नौसैनिक दौरे और खनिज समझौते के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीति में एक साफ बदलाव दिखाते हैं। वॉशिंगटन अब अपने दक्षिण एशिया नीति को नए सिरे से देख रहा है और ऐसा लगता है कि वह पाकिस्तान के साथ नए सहयोग को चीन और कुछ हद तक एक अधिक स्वतंत्र भारत के खिलाफ एक रणनीतिक साधन के तौर पर देख रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती निकटता का चरम बिंदु 25 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ताकतवर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ बंद कमरे में चर्चा की। सेना प्रमुख की इस बैठक में मौजूदगी खास मायने रखती है, क्योंकि यह पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति में सेना की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करती है। यह उच्च स्तरीय बैठक, जो मीडिया की नजरों से दूर हुई, प्रतीकात्मक इशारों से आगे बढ़कर असल रणनीतिक हितों पर केंद्रित थी। यह बैठक पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत संदेश थी। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिससे वॉशिंगटन में उसकी सीधी पहुंच और प्रभाव फिर से स्थापित हुआ है, जो पिछले कुछ वर्षों से कम हो गया था। बताया जाता है कि इस बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दे शामिल थे। प्रधानमंत्री शरीफ की सरकार के लिए यह बैठक एक जरूरी राजनीतिक बल देती है, जिससे वह देश की सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को संभालने में अपनी क्षमता दिखा सकती है। वहीं जनरल मुनीर के लिए यह सेना की उस भूमिका को मजबूत करता है जिसमें वह पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारियों की अंतिम गारंटी बनकर उभरती है, जिससे उसकी संस्था की प्रतिष्ठा देश और विदेश दोनों जगह बढ़ती है। हालांकि इस बैठक के प्रभाव सबसे ज्यादा नई दिल्ली में महसूस किए जा रहे हैं। भले ही अमेरिका और पाकिस्तान स्वतंत्र देश हैं और अपने हितों के अनुसार कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस नए समीकरण का समय और स्वरूप भारत के लिए चिंता का कारण है। यह ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका भारत संबंधों में व्यापार और रूस के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी को लेकर खटास है। पाकिस्तान के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं को व्हाइट हाउस में स्वागत करते देखना, जबकि भारत को अमेरिकी व्यापार दबाव का सामना करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की लेन देन वाली प्रकृति का एक स्पष्ट संकेत है। इससे यह भी साफ होता है कि अमेरिका क्षेत्र में अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान के साथ संबंधों का इस्तेमाल करने को तैयार है। भारत के लिए इसमें कई संदेश हैं। सबसे पहले यह दिखाता है कि अमेरिका केवल भारत पर निर्भर नहीं रहेगा और दक्षिण एशिया में अन्य साझेदारियों को भी मजबूत करेगा। दूसरा, इससे पाकिस्तान को यह भरोसा मिल सकता है कि उसे वॉशिंगटन से अधिक कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। तीसरा, यह भारत की रणनीतिक गणना को और जटिल बना देता है, क्योंकि अब उसके मुख्य प्रतिद्वंदी को एक बार फिर वैश्विक महाशक्ति का समर्थन मिल रहा है। ट्रंप शहबाज शिखर वार्ता सिर्फ द्विपक्षीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भू राजनीतिक कदम है जिसके असर पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किए जाएंगे। भारत इस समय एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, जहां वह वैश्विक महाशक्तियों की बदलती प्राथमिकताओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका नई दिल्ली पर जबरदस्त दबाव बना रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर 50% का भारी शुल्क लगा दिया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। साथ ही अमेरिकी अधिकारी जैसे ऊर्जा सचिव क्रिस राइट सार्वजनिक रूप से भारत से रूस से तेल खरीदने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। इससे भारत के सामने यह मुश्किल आ गई है कि वह वॉशिंगटन जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और मॉस्को जैसे पुराने भरोसेमंद रक्षा और ऊर्जा सहयोगी के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह बाहरी दबाव भारत की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को और पेचीदा बना देता है। दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में आई नई गर्माहट भी हालात को और जटिल बना रही है। वॉशिंगटन में हुई उच्च स्तरीय बैठकें और कराची में अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये बदलाव भारत की सुरक्षा स्थिति पर सीधा असर डालते हैं। दशकों से भारत को पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक गठजोड़ का सामना करना पड़ा है। अब अगर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं, भले ही वह लेन देन की बुनियाद पर क्यों न हो, तो नई दिल्ली के लिए यह एक नई चुनौती है, जिसमें उसे एक साथ 3 मोर्चों पर विचार करना होगा। इससे भारतीय रणनीतिकारों को क्षेत्रीय गठबंधनों के बारे में अपनी सोच को फिर से परखना पड़ेगा और एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी भू राजनीतिक माहौल के लिए तैयारी करनी होगी। इन बाहरी चुनौतियों के साथ साथ भारत को घरेलू स्तर पर भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अपनी सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं को लेकर। फरवरी 2021 में ऑर्डर किए गए 83 तेजस MKN लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन प्रणाली की समस्याएं उजागर होती हैं। भले ही अभी हाल में 97 और विमानों के लिए नया अनुबंध मंजूर हुआ हो, लेकिन इनकी धीमी गति चिंता का विषय है, खासकर तब जब भारत को रूस की नई पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और चीन की बढ़ती नौसेना जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण टालना भारत के लिए बड़ा रणनीतिक जोखिम है। इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत को आगे का रास्ता बहुत सावधानी और संतुलन के साथ तय करना होगा। वह अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता, जो तकनीक, व्यापार और चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में अहम साझेदार है, लेकिन साथ ही रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को छोड़ना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि भारत की सैन्य जरूरतों और वैश्विक शक्ति संतुलन में इनकी अहम भूमिका है। ऐसे में भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को मजबूत करते हुए हर बड़ी शक्ति के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने होंगे, और यह काम हर दिन और मुश्किल होता जा रहा है। रूस के आक्रामक मिसाइल परीक्षण, आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक होड़ और दक्षिण एशिया में गठबंधनों के नए समीकरण, इन सब घटनाओं का मेल एक और अधिक विभाजित और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नया दौर शुरू हो चुका है, बल्कि यह है कि यह कितना तीव्र होगा। आर्कटिक, जो कभी वैज्ञानिक सहयोग का क्षेत्र था, अब तेजी से सैन्य शक्ति प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है। रूस की गतिविधियां यह साफ संदेश देती हैं कि वह अपने रणनीतिक इलाके में नाटो का दबदबा बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन्य ठिकानों का विस्तार और अत्याधुनिक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों की तैनाती इस क्षेत्र को एक संभावित टकराव बिंदु में बदल रही है। एक नए शीत युद्ध की आहट जरूर है, भले ही यह पिछले दौर से अलग हो। अब यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव, साइबर युद्ध और रणनीतिक संसाधनों व व्यापार मार्गों के नियंत्रण के जरिए भी लड़ी जाएगी। पिघलती बर्फ ने इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया है, जहां नियम अभी तय नहीं हुए हैं। गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अगर रूसी पनडुब्बी और नाटो के युद्धपोत के बीच कोई आकस्मिक मुठभेड़ हो जाए या उत्तरी समुद्री मार्ग पर कोई विवाद हो जाए, तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ेगा। भारत के लिए इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखना और समझदारी से तैयारी करना जरूरी है। उसे अमेरिका और रूस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के बीच संतुलन साधना होगा। अमेरिका पाकिस्तान की नई दोस्ती यह याद दिलाती है कि भारत को अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा। इसका मतलब है अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को तेज करना, चाहे वे लड़ाकू विमान हो या पनडुब्बियां, ताकि वह किसी भी आक्रामकता को रोक सके और अपने हितों की रक्षा कर सके। तेजस विमान जैसे कार्यक्रमों में देरी अब भारत के लिए महंगी साबित हो सकती है। एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत ही इस अनिश्चित दुनिया में उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। आखिरकार, भले ही मुख्य तनाव का केंद्र दूर आर्कटिक हो, उसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस होगी। भारत को अपने समुद्री क्षेत्र की निगरानी बढ़ानी होगी, सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं, बल्कि उन नौसैनिक गतिविधियों को भी समझना होगा
जो दूर दराज के इलाकों में चल रही हैं। उसे अपनी नौसेना, खासकर पनडुब्बी बेड़े में निवेश जारी रखना होगा ताकि वह अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर सके और जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रदर्शन कर सके। रूस की आर्कटिक में गूंज और अमेरिका की रणनीतिक चालों से जो बात सबसे साफ निकलती है वह यह है कि सहयोगात्मक सुरक्षा का युग अब खत्म हो रहा है और प्रतिस्पर्धी स्वार्थों का दौर शुरू हो चुका है। भारत को इन अशांत परिस्थितियों में दूरदर्शिता, ताकत और अपने राष्ट्रीय हितों पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ना होगा।